So good morning all of you. Today we'll start one of the most awaited module is geography. Okay, so first of all we'll see what is the concept that you have to read. Mainly हमें डिटेल करिवा जे what is mean by geography, the branches of geography, geography को केमिति हमें differentiate करिवा types of geography. हमें जेमति कहू जे world geography, Indian geography सो जिनसो कोन बोली डिटेल डिस्कस करिवा. So basic source जोटा कि तमरो fundamental source जोटा कि तमरो OPSC आउ UPSC रो very careful देखो GS point of view, not the optional point of view. बुझियला. So most of you have taken geography as a optional. So don't compare the optional content with the GS content. So first of all, physical geography 11th new NCERT. Then the second will be your Indian geography. Again this is your 11th new NCERT. So in your 11th class you will find two geography book. Okay, and both are based on your physical geography. I mean देखिए physical Indian. Then the third for human geography you have to read 12th new NCERT. बुझिएला. So there are so many coaching centers, they would prefer their student to read old NCERT. So old एबे एते preferable no कारण new रे बहुत बढ़िया कोन है छी ना से content and picture है तो दिस बुझियला. Okay, then for this is your fast reading or for beginners. Then जदि तमे किछि अपग्रेड करिया पाए जाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन इंडियन जियोग्राफी अरविंद कुमार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक. इंडियन जियोग्राफी अरविंद कुमार. जदि ये न पाउ जो आरो सब्स्टिट्यूट अछि क्राउन जियोग्राफी, ओटे क्राउन पब्लिकेशन आछु. बाय एंड लार्ज तमे आरो रिक्वायरमेंट ता फुलफिल करि परियो. बुझियला. सेकंड फिजिकल जियोग्राफी तमे पढि परियो माजिद हुसैन. डोंट रीड सबिंदर सिंह बिकॉज़ सबिंदर सिंह इज ए टेक्स्ट बुक. माजिद हुसैन इज क्लियरली रिटन फॉर द UPSC point of view. So this is your Majid Hussain. बुझियला. Along with one atlas. So mainly optional ले कौन कहा जाए, there are two optional atlas is preferable. One is for your world, another is for your India. So तुम्हें गोटे पढ़ो ऑक्सफोर्ड पढ़ो और फिर वर्ल्ड जो तुम बेसी फोकस करूथुबो तो ब्लैक स्वान. बुझियला. So these are few books you have to read and this is for most. You cannot or you don't have luxury to skip these books. बुझियला. Just 1 minute जदि कि ऑप्शनल पाई चाहो छो which material to read, which content to read. So basically दिल्ली रे कौन चले ना. first one is नीतू सिंह. So there is a नीतू सिंह in Paramount, English teacher. से नीतू नोटी. नीतू होची डायरेक्शन IS कोचिंग सेंटर. नीतू सिंह बुझिया ताकर मटेरियल आसे you can read for optional point of view. देन तुम कौन कर पारिबो आलोक रंजन
and one of the best geography teacher in India, that is your Monocha sir, who used to teach in Bajiram and Ravi. Not Bajirao, Bajiram and Ravi. He is one of the best geography teacher I have ever came across. बुझेला, even JNU professor मान ठार तांको पढ़ा far better. Even his teaching is much better than your Shabinder Singh. Sorry, Majid Hussain. Majid Hussain पढ़ाती rising geography. गोटे कोचिंग सेंटर अछि सेठी से पढ़ौतिले सेतबेले तांकर एज थिला 75 पाखा. तो मैं भी एबे पढ़ौ नथबे. बुझेला. So I used to be a student of these two coaching center, by default this one. So you will get content from these notes also. बुझेला. So for today your first duty is to go and buy all the NCERT. Then you can move to Arvind Kumar and Majid Hussain. Okay, so start with the introduction of geography. So first of all, so as you start every subject by giving the meaning of geography. That means where geography came from or what do you mean by the word geography. This is very important. I am at ecology पढ़ौतले. So I have given your book in. Okay. So when I used to teach ecology, I had given the meaning of ecology. That means where the word ecology came from. Exactly geography re देखिबा where the word geography came from. The first thing, see, this was one of the question in 2011 or 12 UPSC question. Which language? So very importantly, the word geography come from two Greek language. One is your geo, the second one is your graphos. Geo means kono? As you always say, geo means your earth and graphos means description. So बुझियला. Logos means kono? Study. Nomos means kono? Management. Then in graphos means kono? Description. अच्छा, logos हमें कोट यूज करथिले ecology. That means oikos au logos. That means study of your earth. से बोले हमें nomos कोट यूज करथिले economics. Oikos nomos. Oikos होची कोन household. Nomos होची management. How you are managing your household. और तर विभिन्न प्रकार definition होची. How you are managing your limited resources. Then your graphos. As I said, graphos means graph करिया. That means description करिया. So geology ଗୋଟେ word ଅଛି. Geology रे कोन logos अछि. Logos माने कोन study. So there is a very clear difference between study and description. Study माने कोन? You study माने तमे किछि invent करछो. You are finding new fact. You are predicting something. You are getting or collecting the data from any archives. You are collecting the data from any existing study. You are collecting the data from social science. विभिन्न प्रकार डिसिप्लिन रु. सो स्टडी माने कोन? तमे किछ प्रकार one type of research करूछो. But when it comes to description, you are only describing whatever is there. You are only using those facts. बुझला. So हमें as a geography
कौन करुचे वी आर डिस्क्राइबिंग द अर्थ द फर्स्ट बुझीगला द सेकंड थिंग कौन कहूची सो इन सिंपल वर्ड इट कौन कहूची ना जियोग्राफी मीन्स description of earth. So very importantly question ase who is known as the father of geography. So this man coined the term geography and has given so many important contribution for geography itself. So this is he is called father of geography. Kono na Eratosthenes. मुझे लगे नहीं See, he is called father of geography. Don't confuse with physical geography, regional geography, or you can say human geography. तारो अलगा father अछंती. अच्छा. So when we call geography, हमें already कहले कौन? It is the description of earth. Description माने गोटे की वर्ड अच्छी कौन एरियल डिफरेंशिएशन दैट मीन्स कौन ना व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग वन एरिया टू अनदर एरिया और वन रीजन टू अनदर रीजन ऑन ए 3D बेसिस 3D बेसिस कौन 3 dimension basis. So when we are studying a area in 3 dimension basis, finding out the differences between these two regions, then this is called geography. So mainly the logic, or you can say logical perceived geography as the study of area differentiation. The basic objective of geography is to study the area differentiation based on 3D principles. Then second geography was perceived to study all those phenomena which vary over space and association with other factors. How this particular region, how this particular sphere or space is vary from a second space. This is called areal differences. So in your optional, you will find a 60-mark question only on areal differences. How different thinkers have differentiated the areas and why we are studying the area differentiation. So all the things you will be coming. The next is definition. See, this is the layman definition, description of earth. But when as a geography student or a UPSC aspirant, you have to give a concrete definition given by a geographer or geologist. So the first definition was given by Hudson. Se kon koile? Simple, the key word is your areal differentiation. So based on the areal differentiation, he gave a definition. So geography is concerned with the description and explanation of areal differentiation of the earth structure. Exactly जोटा मैं कहली बुझियो जी नहीं बुझेलानी बोले. सेकेंड से कौन कहउचंती ना द सेकेंड जियोग्राफर हार्टनर. वेरी इंपोर्टेंट. एराटोथेंसिस मन रखिलो. देन योर के हार्टसन. देन योर Hattner. So see कौन कहउचंती geography study the difference of phenomena usually relate to different part of the earth surface. Exactly same word कहउचंती but he omitted the term areal differentiation. Exactly same कथा से कहउचंती बुझि पालो कि how different area is related. कौन हला किछि problem. Then देखिए how the subject geography is related to other subject. Other subject माने हमें generally subject को केमिति divide करी. One is your social science, आउटा कोन ना general science. General science से तुमर क्या आसीबो physics, chemistry. These are the, sorry, biology. These are the part of your general science. Social रे कोन आसीबो history, geography, polity, economics. All these are part of your social science. SST teacher कोन दिनी social science. Then देखिवा how this particular geography is interlinked with other subjects. So geography is a discipline of synthesis. हम देखिवा detail. It attempt very important देखो spatial synthesis and temporal synthesis. बुझेला? अच्छा बर्तमान हो जी what is temporal and what is spatial. Very important देखो geography always study about spatial synthesis. Spatial हो जी space region.
whereas your history always study about temporal means how things change according to time. This is the major concern of your history. So comparison this is a clear synthesis between spatial and temporal. So se kotha se kouji temporal kono na this is referring to comparison with respect to passage of time. Amar geological time scale achi kemiti how earth modified itself, changed itself and came to the current position. So spatial kon kouji now in the 3D space how we are relating things, how we are comparing things and how we are differentiating things taku ya kono na spatial synthesis. बुझे होजी so mainly geography recognize the fact that world is a system of interdependency. Geography attempt to comprehend the association of phenomena is related to section of reality. So when your subject or space geography is related to other interdisciplinary subject, polity, economics, history, then your geology, that means all the natural happenings, whatever is happening there, it is totally related with geography. Jodi for example किसी geological new invention hela, tomorrow geography will adopt that one also. जदि किसी politically हमर अछि geopolitics, that means the importance of a geographical region in politics. For example South China Sea. So this is you can say there was a huge dispute in South China Sea. In fact is not was. So several ASEAN country along with Japan, they are claiming their rights. बुझेला कि नहीं. So mainly because of the importance of South China Sea, because once China will take the South China Sea, so they will be blocked, their naval route or their navigation route to the eastern, their navigation to the eastern part of their world will be blocked. Eastern part of this part आमे देखिबा east west कोन सब. Then देखिबा how your geography is related to natural science. So this is your geography. See देखो physical science कौन करूची ना how this is relating to your natural science. Geology is a part of your natural science. This is clearly saying about study of earth, how earth is evolved, the all the component of earth. Then कौन होची meteorology. Meteorology कौन prediction about the weather related things. Then from meteorology the data is being collected by climatology, or you can say when the data of meteorology is used in geography, that part is your called climatology, that is your study of climate. बुझेला. So देखो जो केमिति relate रहउची. So all the inner part is your core component of geography, but when you will skip the boundary or cross the boundary, you will find a different set of subject. Some are from general studies, some are from science and tech, engineering related, then some are from social science. Similarly देखो history is a clear social subject, but very often we do collect data from history and use in our geography. This is called your historical geography. से बोले example ना cartography. Cartography simply study of maps. विभिन्न प्रकार जो मैप अछि, so study of map को कहबा एटा मैप, study of map होजी cartography. But we generally कोन करी data कोठी आनी ना geodesy. बुझेला कि नहीं. Then similarly statistics is used in your geography. ताकू कोन कहवा जीवो ना quantification method. बहुत important. Quantification method 60 mark question very frequently पचारे UPSC OPSC. Optional. So similarly कहूची the physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology and pedology, and thus the pedology माने study of soil. So आमे geography ताकू relate कोठी करजू ना geomorphology. That means all the things we are describing today we have collected the data from geology.
Similarly, all the things we are describing today with respect to climatology, we are collecting the data from meteorology. Exactly, oceanography and geography, soil geographical research. बुझिएला नहीं बोधे? So they have very close link with the natural science. किए? Geography has a very close link as they derive their data from these science. ये गला natural science. Then देखिए how social science related. These are the core subject of your social science. So all the social science discipline, that is your sociology, political science, economics and demography study, they have very clear link with your geography because they are the sole source from which the geographer collect the data. So do they describe their geography. बुझियो जी? अमित बुझियो जी तो एबे देखिए one of the most important portion of your geography. So often we do use a word very wrongly, that is your world geography and Indian geography. So this is a misnomer. There is nothing like world geography, there is nothing like Indian geography. There are two branch of geography mainly हमें पढ़िबा. One is your physical, one is your human geography. हमें देखिबा. So when the physical and human geography, or when we are studying the physical and human geography of the entire world, this is called world geography. बुझिला? So when we are studying the physical and human geography of India, this is called your Indian geography. किंतु आमे तो आमे लागी छे geography, Indian geography और world geography. बुझिला? The major approach to study geography is differentiated into two categories. Very important. One is your systematic, second one is your regional geography. बुझियाला बुझियाला नहीं बुझिबो रुओ. So mainly so systematic geography and regional geography. Very importantly, regional geography kono now where you are studying everything in a region, that means this is a regional geography. Regional geography कोन ना region 1 ले तमे कोन पढुछो climatology, region 1 ले तमे कोन पढुछो soil geography, region 1 ले तमे कोन पढुछो demography. एटा कोन कहवा जीवो regional geography. But when you are focusing on one subject and study it in a global perspective, this is called systematic geography. That means you are only climatology. This is called the systematic geography. बुझियाला नहीं? Very importantly, when you are studying systematic geography, you have no concern about the region. There is no limit of your region. Region लो किछि रोल नहीं. Climate means entire earth रो climate तमे पढ़िबो और entire India रे climate पढ़िबो. सेटा कोन कहवा जीवो systematic geography. गोटे particular subject को उठेबो and you will study for the entire global or Indian or world perspective. But when you are focusing a region and study every aspect about this region which are related to geography, these are called regional geography. बुझिला? Then very interestingly, your systematic geography is differentiated into two category. One is your physical geography, second one is your human geography. And regional geography is a second category. आगु बहुत ऑफनली इग्नोर करा जाउची, बट ओपीएससी केबे इग्नोर करनी. ओपीएससी गोटे परमानेंट 60 मार्क क्वेश्चन 2006 रु देखिबो, यू विल फाइंड ए परमानेंट 60 मार्क क्वेश्चन विथ रिलेटेड टू रीजनल जियोग्राफी.
And very interestingly, when you will write about regional geography, you have to give the contemporary data, you have to give the current data, because regional geography ro basic function hochi how you will develop a region. बुझी? So when it comes to how you will develop a region, आम ऑप्शनल देखा और शिव सर पढ़े थे. So you will see all the scheme related to your rural development ro jette scheme you will read, all the scheme related to your tribal population, tribal region re, because we are studying about regional geography, every region will be focused. Then you will study the development of desert, development of kono rain-fed area, जोड़ा सब rain scarcity zone. So everything you will study based on the region. So in each study you have to give the current data, means current scheme, current information, all the things will be given. कौन करी मु जियोग्राफी टा रखिदेवी बुझी हो जी. अमित नुआ खाता नुआ कॉपी 60 टका वाह देखो अमित 60 टका खर्च कर कौन व्यवस्था ये तुम्हें टेंडर नहीं जाओ सब जगह बुझेला. देन द सिस्टमेटिक अप्रोच कौन, this is a phenomena is studied world over as a whole. So you can easily correlate this systematic approach to your economics. Hi, kemiti how you can correlate this systematic approach or regional approach into your economics पढ़ा है clearly. तुम्हार काम है लास्ट पर्यंत से किसी न कहवा दरकार. माइक्रो जहाँ करूँ इकोनॉमिक्स क्लास रे, सॉरी इकोलॉजी. सो वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो यू कैन इजीली कोरिलेट केमिति पढ़ाई ना मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोटा कोड रिलेटेड हम रीजनल रे. सो सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कहूँ, मैक्रोटा स्मॉल यूनिट. सो मैक्रो कौन हो जिते तुम गोटे किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टडी कर इन द एंटायर वर्ल्ड और एंटायर इंडिया, दैट मीन्स द कौन आयरन और प्रोडक्शन इन इंडिया. दैट मीन्स तुम गोटे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नौ यू आर स्टडिंग इट अबाउट द इंडिया टोटाल रे केते प्रोडक्शन कला सेटा सिस्टमेटिक होजी. गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम उठाउछो एंड यू आर स्टडिंग इट इन ए वर्ल्ड वाइड. जियोग्राफी माने वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स माने योर इंडिया, बिकॉज जतबेले तुम इकोनॉमिक्स पढ़ियो सब बेले पढ़ियो इन ए बाउंड्री. जीडीपी डेफिनेशन ठार आरंभ करके इन एवरीवेयर यू विल से इन ए स्पेसिफिक बाउंड्री, इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. देन माइक्रो कौन होची गोटे स्मॉल रीजन रे तुम स्टडी करछो. पॉपुलेशन इन भुवनेश्वर, दिस इज योर कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे पार्ट. पॉपुलेशन तो नुह, फॉर एग्जांपल तुम कहबो कौन ना जीडीपी इन भुवनेश्वर, दिस इज ए माइक्रो इकोनॉमिक. जीडीपी इन इंडिया विल बी योर मैक्रो इकोनॉमिक. So for example, if one is interested to study the natural vegetation, then he will study the natural vegetation of entire world. ताको कहबे हमें systematic geography. Regional कौन कहूची ना the world is divided into several region. हमें पढ़िबा how world is divided. Mainly there are three types of region: macro, meso and micro. माने macro भीतर गोटे meso अछि. बुझला कि नहीं? So the world is divided into regions at different hierarchical levels. Then all the geographical phenomena in a particular region is studied, means everything will be studied in a particular region. बुझी होची नहीं? बुझी होची?
then systematic approach. Now you will get to know about two more geographer and they are also very important. They are also two fathers. अरे एत्ते बड़ आर्थ बहुत फादर रहिबे गोटे फादर हबनी बुझिला मदर पर आर्थ सिस्टमैटिक अप्रोच कौन कहूँ ना सिस्टमैटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर भन हम्बोल्ट सिर्फ अलेक्जेंडर हम्बोल्ट लख गोटे भन तो नैन अच्छी तो सेटा तुम कन्फ्यूज हो तो भन को हटे दियो हटे देल कौन रहा अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वेरी इंपोर्टेंटली ही इज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी क्वेश्चन बहुत थर आसी एरास्टोथेंसिस नुहति सी होचंदी सिंपल फादर नॉर्मल लोक बुझेला सो ही इज नोन एज कौन ये होची फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी देन रीजनल जियोग्राफी अप्रोच रीजनल जियोग्राफी आइडिया वाज कॉइन्ड बाय के ना रिटर RITTER कार्ल रिटर कार्ल मार्क्स नुहति माड़ खाई हेबे बी केयरफुल कार्ल रिटर बहुत प्रॉब्लम चलती जामिया रे कार्ल रिटर RITTER सर कॉइन करथले तो हाँ बुझेला सो दिस मैन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन जियोग्राफी सो व्हेन इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट when you will study your human geography you will read so many things से बहुत किसी तंकर contribution अच्छी with respect to your human geography so he is known as father of human geography but ताकू छाड़ो एबे फास्ट देखो systematic approach was introduced by के Humboldt and Ritter introduced regional geography. So in morning Nandra sir had called. So she called so many students will come those who have already done 10-15 times classes by Hajra sir. कारण Hajra sir तो geography ताकर चाली जी वर्ष सारा माने रोटेशन बैच चला ना so sir कहले नुआ पिला मान को तांको फोकस दिया जीवो बुझला so काई लागुनी तो मैं 10-15 टाइम करि बोली 10-15 times and this is true बुझेला रोटेशनल बैच दिस इज हाउ तो आम कौन पढ़ले सिस्टमेटिक जियोग्राफी आउ रीजनल जियोग्राफी देन ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच एज आई सेड सिस्टमेटिक अप्रोच रे कोन होजी ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ जियोग्राफी वन इज योर फिजिकल जियोग्राफी एंड द सेकंड वन विल बी योर ह्यूमन जियोग्राफी So this is your physical geography part and this is your human geography part and this is based on kono systematic approach. So physical geography already जानि छ हमरो climatology that means study of climate. Geomorphology माने crust और soil ऊपर हम स्टडी करबा then your coastal माने एटा oceanography ऊपर स्टडी करबा so everything we will see. Then your geomorphology of soil pedology ऊपर अछि then your biogeography so very surprisingly your 11th NCERT they carved out this biogeography and made it a third part आमे कहले गोटे कोन फिजिकल गोटे ह्यूमन सियाकू कहू छी दैट थर्ड पार्ट गोटे इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन दिस इज योर बायोजियोग्राफी वेयर यू विल फाइंड फॉना फ्लोरा फना माने कोन फ्लोरा माने बुझिला कि नहीं सो दीज आर योर क्लियर पार्ट ऑफ योर कोन फिजिकल जियोग्राफी एंड हिस्टोरिकल जियोग्राफी when तमे गोटे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढुछो दैट मीन्स दिस इज ए हिस्टोरिकल जियोग्राफी इवोल्यूशन ऑफ डेमोग्राफिक चेंज माने हमर जो डेंसिटी लोक मानकर केमि चेंज होची डेंसिटी माने नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ए स्क्वायर किलोमीटर
आम स्टडी करुचे कौन ना प्री इंडिपेंडेंस टाइम रू और आम एमती भी स्टडी करी कौन ना प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रू देन हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस 1920 रू आमर डेमोग्राफिक चेंज है देन हाउ इन 1981 लो अगेन चेंज है सो दीज आर कॉल्ड कौन सो डेमोग्राफिक चेंज in India. So this is also a part of your historical geography. कहीं ना by passage of time we are studying the change of demographic settlement. Then your cultural geography, everything related to culture and how the culture has a relation with your geography. Then your political geography, जेमती बुझेला. Then your behavioral geography and environmental perception, population geography, study about the population in a region. Then your economics geography, then industrial geography. So एते exhaustively कोठी भी तुम पढ़िबनी. So important कोन your mainly population geography, economics geography, industry विषय पढ़िबो. behavioral geography is a optional point of view. agriculture विषय wild agriculture पढ़िबनी but in India agriculture पढ़िबो. बुझला. Then देखिबा physical geography. So first of all when we think about physical geography, so 2-3 things very oftenly comes to our mind. कौन first होची soil, then होची water, then होची atmosphere. This is all about physical geography. और जतबल से माने combine करछन the interaction zone is called कौन biosphere. This is होची soil, this is होची water, this is होची air, rain. This is your biosphere. बुझला. So the study of water mainly कौन कहूची hydrosphere. soil कौन होची then तो सही विषय में देखिबा. जियोग्राफी टोटल न्यू मॉड्यूल कहाँ पाई 2-3 अच्छा बहुत जन अच्छा. So first will be your geomorphology. So mainly it devotes the study of landform, their evolution related to process. So geomorphology mainly lithosphere ऊपर तमे फोकस करिवो. lithosphere is a very limited zone of your geomorphology. आमे पढ़िबा entire जिंस को हम lithosphere कहि परिबानी. So this is a very limited zone. बुझला. So ताकू कहबा हमें geomorphology. So geomorphology कोन ना study of landform, their evolution and their composition. Then climatology कोन कहबा ना study of structure of atmosphere. atmosphere of different layer अछि तारो structural composition अछि and the element of weather and climate and climatic type of a region. So all these things come under your climatology. Then कौन होची hydrology, that means कौन study of water related things. So study of your water. बहुत गरम होची ठीक है कोन. So hydrology कौन होची study of the realm of water over the surface of earth including the ocean. So जे माने जियोलॉजी करछन हमें विभिन्न प्रकार कोन एक्वाटिक इकोसिस्टम पढिछे लॉटिक लॉटिक माने सब भूली जाउ छ एमदी केमदी चलियो. लॉटिक माने जति की मूवेबल वाटर, लेंटिक माने सर टिके को 23 करूँ. हाँ बस बस चाइना बने दीजिए रूम को 25 टेम्परेचर केवढे हो. सो जो माने इकोलॉजी क्लास करी ना थी. सो एक्वाटिक इकोसिस्टम तुम जते बेले हमें एक्वाटिक माने कोन वाटर इकोसिस्टम जो स्टडी करबा जते हमें ताकर हैबिटेट विषय study करिवा. habitat माने the place where the animal or plant reside. So there are two types of aquatic. One is your lotic, one is your lentic. Lotic माने लटपट होबा गड़ीबा ता माने moving water
वाटर लेंटिंग माने स्टिल वाटर बुझी होची तो ताकू छाड़ एबे हाइड्रोलॉजी कोन ना स्टडी अबाउट द water realm where you will find your ocean, your lake, your river, your pond, your pool, everything. Then kono na soil geography where you will find the distribution of soil, the evolution of soil and the composition of soil. ताक कोन कहबा हमें soil geography. So these are the categorization clearly given in your NCERT 11th class NCERT. बुझे लगी नहीं? So this is your part of physical geography. And when we will go to human geography, then first होची कोन social cultural geography. That means study of society and its spatial dynamic. ओटे ट्राइबल पॉपुलेशन ऊपर तुम स्टडी करछो बुझेला देयर एक्टिविटी सो सेटा आसीबो कोठो ना कल्चरल जियोग्राफी देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी. So there are two types of habitation. One is your rural, second one is your urban. So when you will study about the population को आ जाए demography. So when you will study about your demography in a rural and urban region, ता कहबा कोन population geography. जो से तुम कोन पढिबो ना density पढिबो, sex ratio पढिबो. इंडिया में पढु न सब केरला रे केमिति हाई sex ratio, हरियाणा रे केमिति the ratio is deteriorating. Then माइग्रेशन विषय पढ़ो. माइग्रेशन मीन्स दुईटा जिनस गोटे है इमिग्रेशन आ गए एमिग्रेशन. माइग्रेशन हूँ गोटे माइग्रेशन ऑलवेज देयर इज टू रीजन. माइग्रेशन सब कौन करे दुईटा जिनस कनेक्ट करे. गोटे हूँ सोर्स रीजन आ गए डेस्टिनेशन. सोर्स रीजन कौन कह एमिग्रेशन ये हूँ इमिग्रेशन. ना आउ थे कह so simply migration when we study about migration always two region is connected. गोटे रीजन हूँ द सोर्स रीजन जो लोक मैंने बाहर बैग पटा धरिकी द डेस्टिनेशन जो घर भड़ा खोजुंट बुझेगा. सोर्स हूँ आमर जी सब रूरल रीजन इवन अर्बन माइग्रेशन भी अच्छी. डेस्टिनेशन कौन सूरत चेन्नई बैंगलोर. सो दिस इज कॉल्ड एमिग्रेशन और से लोक मानू कह एमिग्रेंट. ये हूँ इमिग्रेशन. इमिग्रेशन माने देखो आई माने इन करवा भीतर को आसवा सेटा हूँ इमिग्रेशन. एमिग्रेशन माने तार अपोजिट लगे दियो एग्जिट करवा. आई कौन 371 आई कौ स्टेट सब पाठ को पोड़ी देगी बादाम गोटे जिनस मिले बादाम खाओ ओनली सॉल्यूशन. बाणी बिहार में खाई पी या चलीच जिम जाओ population geography. Then next is your economic geography. That is study of all the economic activity. That means trade केमिति होची आ कोन agricultural activity, all the natural resource exploitation, tourism, trade, all things will be studied under your economic geography. The next will be your historical geography. That means with the passage of time tomorrow geographical settlement केमिति चेंज होची. Maybe it is physical geography, maybe it is human or economic geography. Economy हमर केमिति चेंज होची. आमर इकोनॉमी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस आमर थिला agrarian economy. Agrarian economy माने when your major chunk of GDP coming from agriculture activity. Agriculture और allied सब कहा जाए mining, quarrying ये सब जिनस. So आमे केमिति एग्रीकल्चरल और agrarian economy रो एबे हेगले कोठी की ना service led economy. That means more than 50% of our GDP is coming from third sector, service sector. This is a complete transformation, complete process. So in this process time play a crucial role. That means it is come here historical geography under रे आमे केमती passage of time रे हमर किसी system change होची बुझेला. Every region undergo some historical experience before attaining the present status. Political geography
how a political, you can say how a geographical landmass is important in politics, how Indian Ocean is important for China, and China is encircling India by using Indian Ocean. विभिन्न प्रकार port केमती से नहीं गलानी बुझे. So all these things you will study in your कोटी पॉलिटिकल जियोग्राफी. इन योर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली एम सब लिखाई हिस्टोरिकल नहीं पॉलिटिकल क्लियरली लिखाई. इंडिया रे भी अच्छी द रोल ऑफ हिमालय आमर जो पीओके चलती डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. देन योर इंडिया एंड चाइना अक्सय चीन. सो ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस कैटेगरी. मीन्स जियोग्राफी रो पॉलिटिक्स सहित हाउ इट इज रिलेटेड. देन इकोनॉमिक जियोग्राफी इज वेरी इंपोर्टेंट वन. इंडस्ट्री पढ़ो, ट्रेड पढ़ो, population geography, migration पढ़ो, different type of race पढ़ो, how many type of people are staying in India. So all these things will be covered in your कोठी optional. But GS perspective जहाँ हो आमे इठी देखिवा. बुझिला. So we completed the systematic approach. Out approach रहिला कोन regional approach. बुझेला. But as I said, in this systematic approach, NCERT had taken out the biogeography from physical geography. से कौन कहूँ ना biogeography is a link between physical and human geography, where you will find animal, plant, and their activity. Biogeography. So the interface between physical and human geography is called biogeography, which include कौन. First होची plant geography, that means study of plant. तुम बुझी पारुछ सीरियसली बुझी होची नहीं ना से आर्ट स्टूडेंट तो देन होची geography. So who study the special pattern and geographical characteristics of animal and their habitat. बुझी हला कि नहीं. जेतले में वाइड जू आसी इकोलॉजी आम जू विषय कौन कहि परिबा. डोंट वरी जे माने इकोनॉमिक्स करिछ देश पाई एते भलो काम कलो एनसीसी रही पाठ इन देयर हैबिटेट conservation. So mainly there are two types of. पुणी लेख 50 थर 200 थर लिखि दियो मन न रही तो गला कई लिखिबनी एक्सिटू आउ इनसिटू. सो मेनली दोज हु आर न्यू आमे सब विभिन्न प्रकार कंजर्वेशन प्लान अच्छी, टाइगर रिजर्व अच्छी, नेशनल पार्क अच्छी बुझेला. देन योर जू अच्छी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क. सो एंटायर कंजर्वेशन आमर जो सिस्टम अच्छी बा एंटायर कंजर्वेशन एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अच्छी ताको हमें टू कैटेगरी डिफरेंशिएट करूछु. गोटे हला एक्सिटू आउट होची इनसिटू. इनसिटू माने से माने जोठी अछंती. मोटे एग्जांपल देथिली तांको जे तांको प्रचुर माड हुए घर. सो से कोन सी जे विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सी जाई गोटे एफआईआर पके देले कोठी कमिश्नर पाखरो कारण आउ के पुलिस शुणु ना. कमिश्नर कौन कर इधर दीटा प्रोविजन दब. गोटे कह जे तुमको आम रिहेबिलिटेशन सेंटर को उठे आनिबा दैट इज कॉल्ड एक्सिटू. जिते आम एनिमल मानू तांको निज हैबिटेट रु बाहर को नहीं आसी प्रोटेक्शन जोन को फॉर जू आउ कौन बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक आउ इनसिटू कौन पुलिस कमिश्नर कहले आम दीटा लेडी कनेस्टेबल पठेबा तुम घर को हु विल सेफगार्ड यू. दी जन आसी आपको जगिबे ताको माँ और आंख भितर गोटे ब्रिज करेंगे माने गोटे गैप रखिए बुझेला. से होजंती इनसिटू दैट मीन्स योर नेशनल पार्क. आउ कौन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, क्रोकोडाइल जहाँ भी तुम ह्यूमन रिजर्व. सो दीज आर ऑल कंजर्वेशन. बुझेला कहीं आसले टी. अच्छा जू बुझेला कि नहीं. अमित पुराना गंजी पंजी थी तार गोटे नहीं आसो ना आणव गोटे पॉलिथिन आण कारण नहीं जीव पुणी ना ना डर्टी हैंड इज ए साइन ऑफ क्लीन मनी ता माने नुह तुम डेली अपरिष्कार हो.
এটা স্যার আর স্টার্টিং রয়েছে ওদের स्टार्टिंग रू किए पिला अछ যে ভাই तुम भाई कहाँ थी तुम्हें केवे जॉइन करथिलो तुम्हें फास्ट टू क्लास करछो ना मोर आईआर फास्ट जो मु आईआर नहीं थी सेप्टेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर डिसेम्बर आईआर करथिलो एआर आईआर करछो कि नहीं छाड़ीबनी किछि देन होची इकोलॉजी इकोलॉजी माने कोन सो सिंपली इट डील विथ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट इकोलॉजी माने ओइकस लॉगस हम देखिथिले पूरा क्लियर डेफिनेशन देखिथिले कि नहीं स्टडी ऑफ होम सो ओइकस लॉगस होची যেতବେଳେ এটি হোম কହୁଛି মানে ତମ ଆମ ଘର ନୁହଁ ପ୍ରଧାନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ସବୁ ନୁହଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆର୍ଥ ଟିକେ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କର ଖାଲି ମୋ ଘର ସୋ ଆର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ହୋମ ହ୍ୱେନ୍ वी आर ଷ୍ଟଡିଂ अबाउट द आर्थ ତାକୁ କହିବା ଇକୋଲୋଜି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ देयर आर टू कंपोनेंट इन ए आर्थ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୋଟିକ୍ देखुले कि नहीं आउटे ए बायोटिक सो इन बायोटिक दोज हु हैज लाइफ ए बायोटिक माने दोज हु हैज नो लाइफ सो वी आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल आर कमिंग इन बायोटिक कंपोनेंट ए बायोटिक माने सन रे देन कोन वाटर लैंड लैपटॉप एवरीथिंग विल कम इन योर एबायोटिक इकोलॉजी कोन कहूची हाउ दिस बायोटिक आर इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्फ एंड अलोंग विथ द एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग एनवायरनमेंट बुझिला आमे केमिति अरे बुझ टिके कथाटा बुझे सकाळु केते मु कोठु वेरी टफ मुंडु आसीबनी मॉर्निंग बैच रे पाठ बी केयरफुल हमरो मेंस माइंड खोलते खोलते दिन दीटा 3 घंटा सरी दियो सो इकोलॉजी इकोसिस्टम देन होची कोन एनवायरमेंटल जियोग्राफी एनवायरमेंटल जियोग्राफी कौन कहूँ ना स्टडी ऑफ एनवायरमेंट सो कंसर्न वर्ल्ड ऑफ हर लीडिंग कौन रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एबे all the problem related to environment will be coming in environmental geography recently UNFCCC गला मैड्रिड कोठी स्पेन मैड्रिड which one number केते 25 बुझेला so those who are new you will get to know about UNFCCC in your ecology module राजी इधर लास्ट एडा हो गया ना ना आओ कहूँ तुम छोट पिला तमें बुझेला देन हूँ योर रीजनल एप्रोच सो आम देखते बुझेला सिस्टमेटिक एप्रोच सैला सिस्टमेटिक एप्रोच वी कैम अक्रॉस फिजिकल वी कैम अक्रॉस ह्यूमन देन कौन जियोमॉर्फोलॉजी बायोजियोग्राफी देन दिस विल बी योर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन योर रीजनल एप्रोच रिटर्न सो ब्रांच ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल सो फास्ट देखा कौन रीजनल स्टडी और एरिया स्टडी सो एंटायर आर्थ को आम केमिति रीजन हिसाब से डिफरेंशिएट करूँ सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीजन वन इज योर मैक्रो रीजन मैक्रो मान तुम्हें माइजन क्लियरली देछि जो गोटे रीजन भीतर स्टडी कर जोटा कि 2 और मोर स्टेट को कनेक्ट करथो सो डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड डेवलपमेंट ऑफ छोटनागपुर प्लाट्यू दैट मीन्स छोटनागपुर प्लाट्यू बिहार रोची झारखंड रो छत्तीसगढ़ रोची बुझल दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रीजन कनेक्टिंग 2-3 स्टेट्स ता कहया कोन ना माइक्रो रीजनल सिंथेसिस वेरी इंपोर्टेंट देयर आर आमे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पंजाब रो बाहरची जेन राजस्थान लासिकी मीट करची एंड वेरी इंपोर्टेंटली इट हैज ए ग्रेट
concern for other state also कारण ये वाटर ड्रेनेज करूची सो कौन पंजाब राजस्थान ये होची इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट विभिन्न प्रकार अछि सो व्हेन ए प्रोजेक्ट इज डीलिंग विथ 2 or more स्टेट ता कहबा रीजनल सॉरी मैक्रो अच्छा मेसो कोन ना जदी गोटे स्टेट ऊपर हम फोकस करबा वन डेवलप जगा प्रोजेक्ट रिसेंटली पाइला वर्ल्ड हैबिटेट प्राइज जगा जगा नो सॉरी जागा जागा मिशन जो मान को जागा मिशन जो मान करो लैंड नहीं दोज हु हैज नो हैबिटेट they were provided habitation by the government of Odisha ta कहते जगा मिशन very importantly this mission because of this mission Odisha government got world habitat prize वर्ल्ड हैबिटेट प्राइज बुझिला सो ओडिशा ऊपर स्टडी करूचे ता कहूचे हमें मेसो एटा यूनाइटेड नेशन लो पढिबो तमे स्पेशल एजेंसी रे स्पेशल एजेंसी अच्छी तुम तार ब्रांच विभिन्न प्रकार अच्छी सो यूएन इंटरनेशनल पढ़ो कौन वर्ल्ड हैबिटेट ताको यूएन हैबिटेट बुझेगा कि नहीं देन योर मेसो पानी अच्छी देन योर माइक्रो रीजन माने वेरी इंपोर्टेंटली केबी के प्रोग्राम बुझेला दैट मीन्स व्हेन यू आर फोकसिंग ए पर्टिकुलर रीजन वेरी स्मॉल रीजन ता कहया कोन ना माइक्रो महाराष्ट्र रे जेमिति अछि कोन विदर्भ रीजन गोटे कोन माइक्रो प्रोजेक्ट गोटे पर्टिकुलर स्मॉल रीजन को फोकस करा जिवो सो व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट रीजनल स्टडी और एरिया स्टडी वी विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ रीजन गोटे माइक्रो गोटे मेसो गोटे मैक्रो माने मैक्रो मेसो एंड माइक्रो देन आमे पढ़िबो कोन ना रीजनल डेवलपमेंट दैट मीन्स हाउ डिफरेंट स्कीम डिफरेंट प्लान इज started to develop a region it is simply about a list of scheme with respect to urban population with respect to slum development with respect to kono na hilly area development program with respect to island development program so there are several program achi Andaman and Nicobar pai specifically से सब आसो कौन ना आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से भाया हिली रिजन डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी डेजर्ट रिजन डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी रेनफेड जोटा कि जो रेन प्रॉब्लम अच्छी तार डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छी सो एवरीथिंग यू विल स्टडी अंडर योर रीजनल डेवलपमेंट देन होची रीजनल एनालिसिस द लास्ट वन इज योर रीजनल प्लानिंग हाउ यू विल प्लान टू डेवलप ए रीजन से तुम आसो कौटी ना रूरल एरिया एंड अर्बन रीजन बुझी सॉरी मेसोटा ओनली वन स्टेट सेमती किसी नहीं मेसो होची स्मॉल रीजन स्टडी करा जिवो माने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं जे गोटे स्टेट की दीटा स्टेट माइक्रो मैक्रो होची कोन व्हेन द रीजन इज ए बिग वन सिंपली तार किसी नाही एति की स्क्वायर किलोमीटर हेतिवो एति की हेतिवो सो इंडिया रो केते जियोग्राफिकल रीच केते अछि इंडिया रो 32 lakhs 87,000 कहते 263 बदे किलोमीटर मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट यू नीड टू कोट दिस वन इन योर जियोग्राफी पेपर जोटा कि हमर रहउछ कहते 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास बुझी पार न बदे तुम घरे जो करनो 3 डिसमिल हम आर्थ रे अछि कहते 32 lakhs इंडिया रे 32 lakhs 87 63 किलोमीटर स्क्वायर मैं इंडियन जियोग्राफी डिटेल देखिए वेरी इंपोर्टेंट नेट रे देखि दो नेट रे खाली स्टेटस अपलोड हुए नी देखि पारियो बर्थडे कार गला रिसेंटली हैप्पी बर्थडे बिलेटेड ट्रीट फिट सब मिल जाई तो छाड़ी होनी बुझेला देन देखिबा रीजनल स्टडी हम जेटा देखिले कंप्राइजिंग माइक्रो मेसो एंड
macro. Then your regional planning, mainly plan with respect to your rural or urban region. Then your regional development, जेटा मु कहली विभिन्न प्रकार. Then your regional analysis.